eBay or whatever the website you shop on online, right? So a lot of these data is being collected by a lot of companies wherever you are doing anything on the internet. Now, this data is the new oil or the new gold also. Using this data, companies will want to know which customer of mine is buying what product of my shop or my offering, and I can tailor my offering or customize my offering to better the customer delight, right? Or even I want to know which products of mine are selling more in the Lucknow region, which is selling more in the Hyderabad region. Accordingly, I will produce more products and sell more products accordingly to these two geographies. So a lot of data being collected, and now there are tools to analyze this data, understand the patterns. Once you understand the pattern, you can see, okay, these are the patterns. That means in Hyderabad, Parle-G product is being sold more, for example, and in Lucknow, Monaco product is being sold more, like in terms of biscuit brand. If I talk about very small example, but example nonetheless, right? So for a FMCG company who produces biscuits, FMCG meaning fast mover consumer goods companies, right? So for those companies, this is very important to understand that I will sell more, I will manufacture and push my supply chain to sell more products like these basically Monaco in Lucknow and the biscuit products Parle-G in Hyderabad in the example that I just gave. So who will uncover these insights? A business analyst. They will gather the data, they will understand the data, first of all, gather the data, clean the data, organize the data, then they will understand what the data means, what are the clusters in it, using sometimes machine learning, using sometimes automated no-code, low-code, AI-driven applications and data analytics application like Power BI. And then finally, they will decide that what is the right business decision that I have to make. So using data to make the business decisions. Huge career opportunity here for everyone coming from any stream. No need for computer science background, my friends, my dear students. No need to have coding experience. There are no code, low code applications which companies like Google, Microsoft have developed. They are also pushing it with their coding community that use these applications because AI will code for you. You just have to talk to the AI. It's called large language models like ChatGPT and all, which we will cover today, right? Which we will cover today. So, yes. Okay. The topic is... Yeah, okay. So the topic is in demand paying jobs. It is mostly, Anshika is asking this question, it is mostly AI these days. Yes. I want to know how much will it affect the job as I want to go into web development. Definitely. See, web development and app development is what? If you will not make the website, not make the app, who will come and who will give you the data? So obviously, web development and app development is a way to collect the data and whenever someone is shopping or doing anything. So definitely along with AI, along with, these are all emerging technologies. Let me tell you about that. Artificial intelligence, blockchain, cyber security, cloud computing, Internet of Things. Then you even have digital marketing. Then you have Internet of Behavior. Then you have 3D printing. Then you have this web development, app development, using front end, using back end, using SQL databases. So you can become the very proficient an engineer or an analyst in each of these divisions. And the good thing again is no need for any prior coding or school or college coding experience. You can just learn it on some of the courses online, like we also offer some of the courses, and can straight away start implementing those because the courses that we offer or some of the other parties also offer have hands-on applications, hands-on projects. In our case also, we do hands-on projects, which you can show in your CV also, that I have done this in this project, from this in this globally award-winning company at ebook and all that, right? So definitely app development, web development, good future.
I'm doing a certificate course in project management. What can I do to cover this could make it a career afterward? See, the project management is a good course. PMP, project management certification, project management professionals, PMP, are also very much high in demand. Definitely. So the whole idea being, yeah, Vaishnavi, you can type the question in the chat box. I'm answering that until I have time. Yeah, I have 4 to 5 more minutes before we get on with this session. So yes, so project management is a good PMP, but anything that you do, try to have a tech implication of it. Think about how can any tech be used along with it. Can I use artificial intelligence? Can I use blockchain? Can I use cybersecurity? Can I use Internet of Things? Can I use 3D printing? Can I use Internet of Behavior and new emerging technologies? Can I use robotics? Can I use drones? Right? Think about how you can use some sort of technology. And these days, AI. You know, if you have a lot of experience of how to handle a project, can you train an AI model where people can just ask a simple question and it can be done without coding experience? Okay, so they will ask a question and then the model, the chatbot, will act as a project management expert, and he will give out the answers as a tech. So that's called prompt engineering. You are teaching the computer, the chatbot, to understand a comment and respond accordingly. So prompt engineering is another very new topic or career opportunity which we will talk today. And even if I use engineering, don't worry about. I'm doing BCom. I want to know which course should I opt for my graduation. Graduation, of course, after my graduation, right? Which will be beneficial. So, I mean, you can go for, I don't know, like these new age career opportunities. Like you can understand data analytics because you know business. You can go for a course on business commerce standpoint. Now you will understand the tech part of it, right? So these are the two great things. Okay. Shivani, you are able to answer now in the Q&A? Yes, yes. I have answered a couple of questions. Very good, very good. Written them. No worries, no worries. So in case people ask too many questions, you can type in between, but we'll keep it more questions at the end. So you can stay till the end and even like half an hour more, or even if you want 1 hour more, we have time, we can stay more. And one more thing, please stay till the end of the session. All of you who will stay till the end, I will take a snapshot of the attendance, and all of you will get the certificates from Edubook side as well as obviously from the site as well, right? So please stay till the end, and there is a very good announcement, bonus announcement, something that I am offering for only you guys, only you students today, because all of you are attending this session. So please stay. That is something very, very relevant for your upcoming placement season. Everyone has to do it before even entering the placement season. Everyone has to make that document, which I will offer. Okay. So 1 minute to go, sir. I think after a minute, we'll officially open the session. Absolutely, ma'am. Absolutely. Ayushi, you may start now, beta. Okay, ma'am. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this online session. I, Ayushi Gupta, is honored to stand before you today as a member of the placement cell hosting this event on topic high-paying, high-in-demand jobs and career opportunities for freshers in Indian and international MNCs. In an ever-evolving job market, it is crucial for us to explore and understand the awareness that promise not only professional growth,
but also financial stability. Today, we have gathered here to hear from our distinguished speakers who have excelled in their respective fields and have valuable insights to share. Our aim is to gain a deeper understanding of the dynamic landscape of high-paying career opportunities and how we can position ourselves for success. Without further ado, I would like to extend a gracious welcome to our speakers, Mr. Apoorv Bajaj, the Director of EduBook, and Mrs. Shivani Mehrotra, the CEO and co-founder of EduBook. Before we move forward, I would like to take a moment to acknowledge the invaluable guidance and support we have received throughout the planning of this event. Our teacher coordinator, Dr. Diksha Sharma, HOD of Banking and Finance Department, has been instrumental in making today possible. I would like to invite Dr. Diksha Sharma ma'am to share a few words with us. Thank you, Ayushi, and welcome to Apoorva ji and Shivani ji on this digital platform of National PG College. Respected members of the placement team, my colleagues and my dear students, today's session is very relevant because we talk of Skill India, and you know that almost 7 days prior from today, the Prime Minister launched the Skill Digital portal, whereby students can now, skilled students can now apply for jobs online. So they're opening government jobs also online. Ma'am are from EduBook, an EdTech platform and a highly regarded and awarded platform of ed technology. So we have both of our panelists today to deliver the session to our students and to enlighten our students. So over to you, Ayushi, again. Thank you, ma'am, for such wonderful words. Now, I would like to introduce you all to our speakers present today, who is Mr. Apoorv Bajaj, engineer from IIT and MBA from IIM, a CFA chart holder with all 3 levels cleared in first, with 10 plus years of financial markets and working with MNCs like Goldman Sachs, JP Morgan, DE Shaw, and Global Data's Quant-Hedge fund client. Completed training from IIT Hyderabad, IBM, and Google on various technologies. Sought after global consultant and trainer in emerging technological skills. And Mrs. Shivani Mehrotra, university topper, UGC qualified professor in economics and management. Top 30 Young Indian awardee with more than 10 years of experience in education industry. Appointed as National Vice President of Emerging Technologies Wing in WICCI. Microsoft Certified Innovative Educator for Emerging Technological Skills. I would now like to call our panelists to ignite a passion for high-paying careers and provide us with the path to turn our dreams to reality. I will now hand over the session to you. Sure. Thank you, Diksha ma'am, and thank you, Ayushi, for having us in this session. And we can already see the enthusiasm of the students who are asking great questions. So once again, feel free to put your questions, and we'll take it in the end, and we can stay more than 1 hour if required. No problem with that. Okay. So let's get started. So basically, this is the context, right? As I was speaking, that first industrial revolution, second industrial revolution, third industrial revolution. So in first, we were doing all the mechanization kind of work by machines, and then mass production happened using machines and oil and electricity. Then production started becoming automated using electronics and all. Now, today, we are into fourth industrial revolution in 2005 and onwards, and entering into fifth later on. But today's industrial revolution is all about using these emerging technologies like cybersecurity, artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, chatbots, blockchain, cryptocurrencies, virtual reality, augmented reality, metaverse,
These are the technologies which are making the world or making the companies more effective and more efficient. When World Economic Forum asked a lot of companies, especially top 500, that which technologies are you using now, which you will keep on using, almost all of them selected most of these emerging technologies, right from 71% to 87%, including they are already transforming the companies using these technologies, and this will keep on transferring as a in the later stage as well. Now, emerging technologies are ripe for disruption. Today, which is a 2020, which was a $14-15 trillion market, now will grow 15 times in next 7 to 8 years by 2030. Right? All these usage of all these technologies. So the time is very, very important. Time is now to understand these technologies and also become skilled in these. And as ma'am was mentioning, that even government has opened the portal for people who will be students who will be skilled in these technologies for getting jobs, right? Now, what is happening in the today's job market, broadly speaking, is something very unique, or something that's an inflection point, I can say. We cannot now depend on only the traditional career paths of becoming an engineer, doctor, CA, MBA, IAS, BCom. In fact, under national education policy, all these institutes have been told to become multidisciplinary, to offer new courses on emerging technologies, including, and get credits in return also. So everyone is realizing, because the corporate needs the people in these skill sets, colleges have to provide it. If they are not right now, then slowly students will have to learn on their own online, and then obviously I'm sure colleges will start, and most of them are already. Yeah. Apurva, sorry to interrupt you. Please, could you add Shaheen as the panelist, or she is unable to switch on her camera? I'm so sorry to interrupt. But I added her. No problem. I am adding her on. Okay. Thanks. No worries. Okay. So we cannot depend on the traditional career paths of becoming engineer, doctor, MBA, CA. The colleges are doing a great job, and they will come to the point that they will also start offering, because they have to follow a national education policy being in India. But the onus lies on us, the students who will go to now placements, right? That we should be skilled in these jobs, and in these technologies, and in these new age career paths. And I'll speak to that in the next slide. So the job market has become dynamic. We need the necessary skills to get a job in MNCs. Gone back are the days that just a degree is enough. No, you are a great student of a great college from Lucknow, highly reputed, I understand. Still, you will need some skills to show on your CV besides a great college. So great college is working in your advantage. But with that, add some of the skills there. Right? Now, major problem is the another one is lack of knowledge and awareness about the new and future relevant careers. This is also another issue, that students don't have the knowledge about future relevant career paths, which have now changed in the next slide, which are coming up for you guys. Corporate jobs require technology-driven skills for new age career paths, which now we will discuss in this slide here, right? So now what are these? So obviously there are tens of hundreds of new jobs, but I'm focused on the most high paying and high in demand ones right now, and will continue till at least 2030, 2035. Because I've given the background for the students who joined late, why these are high paying jobs, but I'll still repeat it here. So engineering, doctor, MBA, CA, IS required, but not the only things that are required. You have to have, these career paths are now slowly changing into these ones. AI analyst, cyber security analyst, data analyst, chat GPT prompt analyst, business intelligence analyst, digital marketing analyst. And we will understand in each of these jobs in next future slides, what are these jobs, what a person should do broadly, and what are these technologies, and how much is the average salary in each of these, and who are the employer types in each of these. Most importantly, no coding skills, no coding background, no computer science background are required. And these career paths are open for all the streams. Anyone can learn these skills. So that is very, very important to understand. Now, why these are the skills? Because
from 2005 until now and going forward, lot of data, whether you are on Facebook, Instagram, data is being sold then to the companies to make better informed business decisions, because decisions based on data is likely to have, and it has proven in the past, is likely to have more results, better results. Meaning, if I know that this brand of biscuit sells more in the north region, in UP and Bihar and Himachal and Punjab, rather than the other brand of biscuit, whereas in the southern zone, in Telangana and Tamil Nadu and all, the other brand of biscuit sells. As a business, if I know this data-driven decision, then I will sell more biscuits, push more of my supply chain to sell more biscuits of that particular category, which sells more in north versus the other one more in the south region. But who will tackle it? You guys. You will collect the data, understand it, clean it, organize it, and then make the data analysis, and then going forward, $1 million work you're doing right there, right? So career option 1, AI analyst, artificial intelligence analyst. अब बच्चों में ये समझते हैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है? तो इसको दो डिवीजन में विल डिवाइड इट, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल हो, एंड इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गॉड हैज गिवन टू ह्यूमन ब्रेन, बट व्हाट इफ वी कैन गिव the same intelligence to the computer system? Can we make computer machines intelligent? That is artificial intelligence. It's a concept of making machines intelligent artificially, that can think like humans and can behave like humans. It's like teaching computers to think and make decisions like humans. For example, अभी हम लोग कार में जा रहे हैं, मेरी 4.5 साल की बिटिया है, a 4.5-year-old daughter. She will now say, Papa, it's a red light, let's stop. Papa, oh, yellow, let's start, meaning let's think about starting the car. Then as soon as it becomes green, Papa, let's go. How? This small human which has just come in the world last 4 years have understood, basis her experience sitting in the car, that his, so जैसे उस बच्चे ने डेटा से सीखा, ऐसे ही क्या कंप्यूटर को हम बार बार दिखा के कैट की इमेज, ये कैट है, अगर मैं कंप्यूटर को 1 करोड़ 20 करोड़ बार दिखाऊं, 20 करोड़ कैट डेटा से मैं कंप्यूटर को ट्रेन कर दूं, उसको इंटेलिजेंट बना दूं, यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड थिंग, तो इसमें ह्यूज डेटा लगता है, डेटा बहुत सारा चाहिए ट्रेन करने के लिए, ताकि वो समझ जाए कि क्या चीज है ये, ठीक है? अब एआई एनालिस्ट कौन होता है भाई? तो ये वो होते हैं जो कि बाकी अपने सीनियर डेटा साइंटिस्ट, ये मैं जॉब जो बता रहा हूं ना, ऑल फॉर द जॉब का फ्रेशर्स के लिए है, जो आप लोग हैं अभी, जो एकदम एंटर करेंगे अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5-year 10-year-old जॉब्स ना, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट वगैरह वो सब धीरे धीरे यू विल पिकअप. बट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और an AI analyst first, right? So what will you do? You will work with other data scientists, other artificial intelligence, senior people on the team, or you will do maths में, if you like statistics, mean, mode, median, all those things, statistical modeling, and you will be using various machine learning algorithm on various data sets को use करके to solve business problems, ठीक है? तो AI क्या करेगा? बहुत सारा डेटा को ट्रेन करेगा, डेटा को लेके आएगा, उससे सिस्टम को, कंप्यूटर को ट्रेन करेगा, उसको इंटेलिजेंट बनाएगा. नेक्स्ट टाइम सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अपने आप वो चल के अपने आप माइंड से अपने आप डिसीजन देगा, जो कि मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा. ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर में आर्टिफिशियली हमने इंटेलिजेंस डाला है. अब इसमें एल्गोरिदम कौन कौन सी है? तो एल्गोरिदम मतलब खूब, ये तो एआई तो एक टॉपिक हो गया, इसके अंदर बहुत सारे छोटे अंदर बहुत टॉपिक है. जैसे कंप्यूटर विजन, जो आपकी टेस्ला कार में यूज होता है, ऑटोनोमस कार में, जब कार चल रही है तो अपने आप स्टॉप हो गई सेंसर से, कार के सेंसर से. जब रोबोट चल रहा है, रोबोट कैसे स्टॉप होगा? कंप्यूटर विजन से, सेंसर से, कि देख के अच्छा मैं कंप्यूटर हूं, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से. फिर मशीन लर्निंग, अगर आप मशीन को ही अपने आप डेटा दे दो कि आप अपने आप लर्न करते चलो, तो वो अपने आप लर्न करते जाएगा. दैट्स मशीन लर्निंग.
उसके बाद आ गया न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स होती है, हर चीज नर्व से होके जाता है डिसीजन हर बॉडी पार्ट में, ऐसी न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन किया जाता है कंप्यूटर को। तो बेसिकली जो भी बायोलॉजिकल गॉड ने हमको प्रोसेस दिए हैं ह्यूमन को, दैट सेम प्रोसेस दिस डेटा साइंटिस्ट विल अप्लाई यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी आजकल जो आप चैट जीपीटी देख रहे हैं उसमें यही है कि नेचुरल लैंग्वेज यूज करके, आजकल की भाषा नेचुरल लैंग्वेज यूज करके आप कैसे एक लिखवा सकते हैं कि कैन यू राइट मी अ पोएम इन अ शेक्सपियर स्टाइल, और उसका आंसर आ सकता है कैन यू राइट मी अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कैन यू राइट मी माय सीवी वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो बहुत कुछ होता है एआई के अंडर भी। तो ये हमें कोर्सेज में सीखना है, समझना है, ये आना बहुत जरूरी है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हर सेक्टर में लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा टेक में, ये ना, हर सेक्टर में लगेगा, हेल्थ केयर में लगेगा, ऑटोमोटिव में लगेगा, ई कॉमर्स में लगेगा, हर तरह में लगेगा। अब नेक्स्ट आया कौन आप लोगों को एम्प्लॉय करेगा, जैसे मैंने कहा अक्रॉस सेक्टर, सॉफ्टवेयर से लेके ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, सब लोग। सैलरी एक्सपेक्टेशन फ्रेशर की 8 to 10 लाख पर एनम, स्टार्टिंग में 6 to 8 to 10 लाख, और 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आपको तो 15 to 20 लाख इंडिया में। अगर आप सीनियर बन गए, डेटा साइंटिस्ट बन गए, एआई साइंटिस्ट बन गए, एआई इंजीनियर बन गए, तब 7 to 10 ईयर का 35 to 75 लाख पर एनम। और ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये अब सिर्फ पाइथन में कपल ऑफ लाइन लिख के, लाइब्रेरी लिख के आ जाती है, इसमें बहुत कोई डिटेल्ड कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, आराम से कोई भी सीख सकता है इसको, कोई भी स्ट्रीम का, नॉट रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। दूसरा है आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। लेट्स डिवाइड इट इनटू two part, one is cyber, then is security. Now what is cyber? Cyber is network of computers, internet, मोबाइल डिवाइस, सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डेटा, जो कि पूरे इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी है वो सब साइबर है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज साइबर। टू सिक्योर दैट इज साइबर सिक्योरिटी। सिंपल, राइट? सो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम्स फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस एंड ट्रोजन्स, ताकि वो सिस्टम करप्ट ना हो जाए आपका। सॉरी। तो ये अटैक क्यों किए जाते हैं? कभी कभी आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपसे पैसा ले लेने के लिए वगैरह वगैरह, राइट? आपके बैंक से पैसा हटा लेने के लिए। तो अब इनमें, तो इन सब चीजों को सिक्योर करना है हमें, सिस्टम को, हमारी को वेबसाइट को सिक्योर करना है, बैंक की, हमारे को हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना है एंटीवायरस का, है ना? तो ये सब कौन बनाएगा? एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर, हमारी वेबसाइट को सिक्योर कौन करेगा? HTTPS कौन करेगा वगैरह। तो ये करते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। लाइक वी क्लोज आवर डोर्स एंड विंडो टू प्रिवेंट इंट्रूडर्स, आउटसाइडर्स टू कम इन आवर होम एंड रॉब और डू एनी रॉन्ग थिंग, ऐसे ही इन द सेम मैनर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट यूजेस टूल्स एंड प्रैक्टिसेस टू सेफगार्ड आवर कंप्यूटर्स, आवर नेटवर्क्स, आवर डिवाइसेस एंड डेटा, right, from the unauthorized access and hacking, right? So just like we lock our doors and windows to prevent intruders from entering our system, cyber security वाले क्या करते हैं? लिस्ट tools तो practice करते हैं to use to safeguard our computer networks from getting hacked। ठीक है? तो अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत कुछ आता है। एप्लीकेशन को, एक ऐप को सिक्योर करना है, पूरे सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। एक कंपनी है, कंपनी में 1000 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर खराब कर दो, 1000 कंप्यूटर बाकी सब खराब हो जाएंगे। सो पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है, ऑपरेशनल करना है, एनक्रिप्शन करना है, एक्सेस कंट्रोल करना है, किसको एक्सेस दे किसको ना दे वो समझना है। सबको, सब एम्प्लॉय को सब चीज की जरूरत नहीं होती है कंपनी, ठीक है? एंड यूजर को क्या बताना है, कैसे बताना है, एजुकेशन देना है, क्योंकि जो हैक करेगा वो आप ही को लेके, आप ही को सॉफ्ट टारगेट बना के हैक करेगा। तो उनकी एजुकेशन, और फिर डिजास्टर अगर हो भी गया तो उससे रिकवर कैसे हो। सो ऑल दिस कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी। अगेन सबको चाहिए, अक्रॉस सेक्टर चाहिए, ये सारी जॉब से अक्रॉस सेक्टर है।
और फ्रेशर को रेलेवेंट स्किल सेट्स अगर हो साइबर सिक्योरिटी में तो 7 to 9 लाख का जॉब स्टार्टिंग में, और 2 to 4 ईयर का हो तो 12 to 5 लाख पर एनम। और ये मैंने खुद फिगर नहीं बनाया है, ये फिगर अलग अलग वेबसाइट लाइक ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स वगैरह वगैरह से एक्चुअल इनिशियल लेवल सैलरीज पे और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने लिया है। 8 to 15 years it is 30 to 50 lakhs per annum। ठीक है, हाई इन पेइंग, हाई इन डिमांड। थर्ड, जितना इंपॉर्टेंट एआई वाला है जॉब, एआई एनालिस्ट का, उतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, जो मैंने समझाया अभी। तो डेटा क्या है? डेटा तो डेटा है, अलग डेटा से कोई मतलब नहीं है हमारे को। उसको एनालाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको क्लीन करो, उसको समझो कि कह क्या रहा है डेटा। व्हाट इज द डेटा सेइंग? You have analytics. What is data analytics? Big data analytics, the process of collecting the data, examining it and analyzing it, large amount of it, to discover market trend, insights and patterns that can help companies to make better decision। जैसे मैं बार बार अभी सेम एग्जांपल दे रहा हूँ बिस्किट का। कोई बिस्किट ब्रांड नॉर्थ में ज्यादा चल रही है, कोई साउथ में ज्यादा चल रही है। अगर एक ही कंपनी की है तो दैट कंपनी विल से अच्छा ऊपर वाला चल रहा है ना, तो यार ऊपर वही वाला बेचते हैं ज्यादा, नीचे वाला चल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको प्रॉफिट बनाना है। एज अ बिजनेस इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, तो आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। क्यों वो बिस्किट भेजना नॉर्थ में जो बिकता ही नहीं है, या उतना ही भेजो जितने पैकेट्स बिकते हैं, राइट? मैं बड़ा शैम्पू का बॉटल बेचूं कि मैं पाउचेस बेचूं इन द टियर 2 टियर 3 अपना विलेजेस वगैरह में, है ना? तो पाउचेस ज्यादा बिकेंगे। 2 रुपए का पाउच, 1 रुपए का शैम्पू पाउच वर्सेस अ बिग पूरी बॉटल, क्योंकि टियर 1 सिटी में ज्यादा सेल होंगे। तो ये सब डिसीजन आप बताओगे कि सिटी में डेटा कलेक्ट हुआ। सर सिटी में तो ज्यादातर लोग बॉटल लेते हैं। सर यही मैं गांव में गया, इंटीरियर विलेज में, वहां पे सर ये तो क्या नाम है, वो आपकी जॉब है ना? तो कंपनीज आर नाउ एबल टू यूज बिग डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड एंटिसिपेट देयर फ्यूचर एक्शंस एंड अकॉर्डिंगली मेक better business decisions suiting customer needs and preferences. So a data analyst is a person who gathers the data, organize, understand, interpret the data, and finally present it to CEO, CMO of the company in a visual format with graphs, charts, and diagrams. This is done to solve a specific business problem, like how to increase revenues or decrease costs. तो ये तरीके हैं प्रॉफिट बढ़ाने के, या तो रेवेन्यू बढ़ा लो या कॉस्ट बढ़ा लो, या दोनों कर लो, रेवेन्यू बढ़ा लो कॉस्ट बढ़ा लो। लेकिन कैसे? पहले डेटा को समझो, एनालाइज करो, कहां पे क्या कर सकते हैं, कहां पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीजन लो, तब बेहतर आता है। ये प्रूव हो चुका है, इसलिए इस करियर पाथ की डिमांड आज है, कल है, हमेशा रहेगी। अक्रॉस सेक्टर्स डेटा हर जगह है माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर डेटा कलेक्ट करता है, स्टार्टअप्स करता है, ई कॉमर्स करता है, हेल्थ केयर करता है, ऑटोमोबाइल करता है, एडटेक करता है, टेलीकॉम करता है, सब करते हैं मेरे भाई, सब। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। क्योंकि सेशन किसके ऊपर है? सारे करियर अपॉर्चुनिटी नहीं बता सकता मैं आपको एक या 2 घंटे। हाई इन डिमांड, हाई पेइंग पे, तो मैं वो बता रहा हूँ जो फ्रेशर्स के लिए है, हाई इन डिमांड है, आगे भी रहेंगी और हाई पेइंग भी रहेंगी। इनमें स्किल सेट्स कर लो तो बेड़ा पार है सबका। सैलरी एक्सपेक्टेशंस, इसमें भी डेटा एनालिटिक्स अगर है आपकी तो 6 to 8 लाख पर एनम स्टार्टिंग में लग सकता है बिल्कुल आराम से, और 2 to 4 ईयर का 10 to 15 पर एनम, और 8 to 15 का 25 to 45 लाख पर एनम तक जा सकता है। ओके, सो फोर्थ इज एलएलएम, प्रॉम्प्ट एनालिस्ट। बिल्कुल नया जॉब आया मार्केट में, ताजा ताजा, एकदम गर्मा गर्म जॉब है सर। एलएलएम प्रॉम्प्ट एनालिस्ट क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी सुना है? चैट जीपीटी है ना? तो चैट जीपीटी से ना बहुत लोग करोड़पति और अरबपति हो चुके हैं। अभी दिसंबर में लॉन्च हुआ था, लोग करोड़पति अरबपति हो चुके हैं, अभी हो चुके हैं। सबसे हॉटेस्ट है ये चैट जीपीटी, डैली। और आपको तो चैट जीपीटी पता है, यहाँ पे 50-60 और एप्लीकेशन, चलो मैं बताऊंगा आगे। आपको तो भी चैट जीपीटी पता है, कम से कम 120-130 और एप्लीकेशन आ गई है ऐसी। ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा मॉडल बनाया गया कंप्यूटर में, चैटबॉट को इतने भयंकर बिलियन ट्रिलियन ऑफ डेटा सेट पे ट्रेन कर दिया गया इसके द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, कि अब वो खुद बोलने लगा।
अब वो खुद बोलने लगा, फिर से लगा दिया वही जो गॉड ने ह्यूमन को दिया है, ह्यूमन ने कंप्यूटर में लगा दिया। सिंपल है। कैसे? जब मेरी डॉटर पैदा हुई थी वो तो नहीं बोलती थी ना, 2.5 साल तक तो शी वाज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। नाउ शी स्टार्टेड टू स्पीक, नाउ शी स्टार्टेड टू स्पीक। वो अपना सेंटेंस बनाती है। कैसे? हम लोग बात करते थे आपस में, हम लोग घर पे बात करते हैं, वो पकड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर जनरेट करते हैं अपना। तो जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी मार्केट में जिसमें कि हम डेटा दे रहे थे तो आंसर आ रहा था, हम गुड़ दे रहे थे तो मीठा हो रहा था। अभी वो गुड़ बनाना सीख गया, अभी वो गुड़ बनाना सीख गया, चाय बनाता है, गुड़ बनाता है, चाय पीता है, मस्त जनरेटिव, और आपको भी पिला देगा वो। तो दैट्स कॉल्ड जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एआई जनरेटिव मतलब क्या? जो जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो चुका है, अब अपने आप जनरेट करता है बातें। भैया मेरे को पोयम बना के दे दो, मेरा सीवी बना दो भाई, भैया मेरा ये टॉपिक है एग्जाम का, कल मेरे को जरा प्रिपरेशन करा देना, ऐसा। तो वो कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग लर्न करेंगे हमारे टॉपिक में, मैं समझाऊंगा अभी आगे, इसलिए लास्ट में रहिएगा। तो क्या है ये? विच इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मॉडल्स दैट कैन जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल कंटेंट सच एज इमेजेस। नया आप टेक्स्ट बोलोगे वो इमेज बना देगा। ये कोई असली की इमेज थोड़ी है, ये तो एआई ने जनरेट करी है। ये आपके सामने कौन बैठा है पता ही नहीं, एलियन है शायद, कोई किसी ने देखा थोड़ी है एलियन को ना, आग सेक रहा है एलियन, पता नहीं कहां से आया, आपने बनाई है, आपने प्रॉम्प्ट दिया है। तो मतलब आप कैसे बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो आप टेक्स्ट बोलते हो, राइट? कि राइट मी अ पोएम, दैट्स अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो एक प्रॉम्प्ट हुआ। अच्छा भैया राइट मी अ शॉर्ट पोएम अबाउट अ जिराफ। बहुत ही वाहियात बेकार प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल बेकार, किसी काम का, बहुत ही जर्नलिस्टिक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? अच्छा, वो ये रहा, राइट मी अ 50 वर्ड्स पोएम। कितने शब्दों की लिखनी है भाई साहब? 50। अबाउट अ टॉल जिराफ हु स्ट्रगल्स। अब आप उसको बता रहे हो कि भैया सिचुएशन क्या है, वो जिराफ स्ट्रगल कर रहा है एंजाइटी से, टेंशन में, बट अल्टीमेटली लर्न कर गया हाउ टू डील विद द हेल्प ऑफ एनिमल फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स, वो नया नया जन्मा था, वो टेंशन में था, बट दूसरे एनिमल की मदद से खुश हो गया वो। तो 50 शब्दों में ऐसी पोएम लिख दो मेरे को। राइट इट इन कैसे लिखे? क्रिएटिव वे में लिखो। और कैसे लिखे? हास्य पद वे में, ह्यूमरस मैनर, मेक इट इन ह्यूमरस मैनर, मेक इट इन क्रिएटिव मैनर। 50 वर्ड पोएम ऑन giraffe. That would be easy for students of class 8 and 9 to understand. क्योंकि मेरे को उनके लिए बनाना है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी, तो वो आपको बना के देगा पोएम। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी जो है कैन बी ट्रेन ऑन अ लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट सच एज बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स। दीज मॉडल्स कैन बी, शिवानी एक डेमो दिखा दें क्या चैट जीपीटी का? Yes, we can show. है ना, एक मिनट ये लिख के ना आप लोगों को दिखाता हूँ डेमो, मेरे को बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, I can see you right now. हाँ, So what is chat GPT exactly? It's a generative AI model wherein you write a question and you'll get the answer in the very same minute. So whatever be the question, if you're using the free version of chat GPT, you'll be able to get the answers in the very same second. So that's the intelligence and that's the level of, you can say, doing work in just fraction of a second. ये देखो, मैंने इसको बोला 50 वर्ड में वही कोई ऐसी पोएम बना दो जिराफ के ऊपर जो स्ट्रगल कर रहा है बट अल्टीमेटली लर्न टू डील विद एनिमल फ्रेंड। तो उसने बना दिया, तुरंत बना दिया आपके सामने, लाइव है ये, लाइव कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इन द सवाना टॉल एंड ग्रैंड जिराफ स्टूड हाई बट लाइफ वाज ब्लैंड। वो जिराफ हाई था लेकिन उसकी लाइफ बेकार थी, एंजाइटी आ रही थी उसको, ओह कितना बेकार समय था, व्हाट अ मेस, हिज नेक गॉट लॉन्गर फ्रॉम द स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस था कि उसकी नेक ही लंबी होती चली गई। देखो उसने ह्यूमरस भी डाला, राइट? फ्रेंड्स गैदर्ड राउंड, उसके फ्रेंड्स आए, उसको प्यार किया, लव सो ट्रू, सेड चिल डियर जिराफ वी आर हियर फॉर यू, राइट? दे डांस्ड एंड लाफ्ड और उसकी एंजाइटी खत्म हो गई। जिराफ लर्न विद हिज पॉल, मतलब ये फ्रेंड्स के साथ, ही इज अनचेन्ड, तो अनचेन्ड हो गया, भाग के खुश हो गए, एंजॉय करने लगा लाइफ। तो ये उसने क्रिएटिव और ह्यूमर मैनर में अपने आप पॉइंट बना दी वाली। ठीक है, अब इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ये इससे कुछ ना मेरे को कुछ नहीं आ रही, रीजनरेट भैया दोबारा बनाओ, मजा नहीं आया पहली बार में, तो ये दोबारा बना देगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये समझना कि कैसे क्या देना है इसको,
इंजीनियरिंग बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इस पे खूब बढ़िया जॉब चल रही है मार्केट में आजकल। ठीक है, तो ये हो गई एक बात कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बनना। तो प्रॉम्प्ट एनालिस्ट कौन होता है? इज अ पर्सन हु टॉक्स टू दीज लार्ज लैंग्वेज जनरेटिव एआई मॉडल इन अ नेचुरल लैंग्वेज। बात करी मैंने, ये तो कोई परदेशी भाषा नहीं है, भारत की भाषा है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बात कर सकते हो, हिंदी का भी आ गया आजकल मॉडल। ठीक है, इंग्लिश में कोई हाथ तंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में करो बात, कोई हिंदी में करो बात। ठीक है, बट कोई नहीं, आप लोग सब लोग, ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश, आई नो। सो जस्ट टॉक टू दिस इन अ नेचुरल लैंग्वेज and extract the most relevant output basis the most relevant input. Whatever you give, the same you will get. ठीक है, अगेन एम्प्लॉय टाइप्स सारे हैं अक्रॉस सेक्टर्स, आजकल बहुत चल रहा है चैट जीपीटी। और अभी तो नया नया जॉब निकला है, तो 5 से 7 साल तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस भी है तो 30 से 50 लाख का सैलरी मिल रहा है। अगर एकदम फ्रेशर भी आ रहा है, स्किल आ रहा है, समझा पा रहे हो, पढ़े हो, 18 से 20 लाख का पैकेज है ऑन स्पॉट सीधा। ठीक है, ऑनलाइन चेक कर लेना इसको, चाहे मैं दिखा भी दूंगा आगे वाले Q&A में। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, शिवानी ये कवर करना चाहोगे? दिस वन, शिवानी? Yes, surely. So you might have, I hope I'm audible. Yes. Okay. Yes, So ma'am. what in case, yeah, thank you so much, ma'am. So what in case of digital marketing? Now we already know that the entire market is moving around the social media. We have Instagram, we have websites, we have live calendars, we have generative AI applications, we have Snapchat, Facebook, LinkedIn. So many mediums are there in order to spread awareness about what we do exactly. You can post your CV, you can immediately connect with a recruiter just in a blink of an eye. With a recruiter, how? On LinkedIn. You can send a request, you can apply for job applications again in a click of a button. So what all this is related to? All of this is related to the digital marketing stuff. If you're able to spread awareness, you can become an influencer also. You have 10,000 plus following on either of these platforms, like for example, Facebook or Instagram or even Snapchat. You can generate again dollars and dollars, or you can say millions of rupees just by posting content with other companies, co-branding stuff, popularizing the other company, popularizing the other medium. Sometimes a new product is going to the market. They will require your help. They will require an influencer. They will write like a ghostwriter. A ghostwriter is a person whose name is not there on the post, but that person has written the post for the company or the particular brand. Again, you get paid in a huge amount. Why? Just because of your talent in order to storytell or sell a product by just writing stuff. So many a times we see there's a particular ad on television, or there are small snippets, shorts on YouTube. What are they doing? They're trying to sell a particular product, type of acting. Sometimes a song sells very fast because many people are just crazy about that particular song. You tend to listen to that song again and again. And how do these people earn? They earn by the ads that are popping up in the middle of that song, or after each song, or beginning of the video. So entire all of these things together comes up to digital marketing. Correct. So कैसे आपको अपने ब्रांड्स को सोशल मीडिया पे और ईमेल पे और मोबाइल एप्स वगैरह पे यूज करना है, इसको प्रमोट करना है टू द डिजिटल ऑडियंस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ये भी हमेशा रहेगा। और ऑब्वियसली everyone who is connected to the internet wants, as a business, wants to sell their products and services, so they will use digital medium, and hence the use of digital marketing. And set the expectation again, fresher digital marketing के जो है स्टार्टिंग में 6 to 8 lakh का लग जाता है, and then person with 3 to 4 year experience 10 to 15 lakh, और ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा केस स्टडीज आपने करी है तो 8 to 15 years एक्सपीरियंस सर 30 to 45 लाख पर एनम पे भी चला जाता है। मीनिंग सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली जॉब यही है, बिकॉज इफ यू हैव अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ एआई डेटा, यू आर एबल टू इंटरप्रेट द डेटा। डेटा तो है, वो स्टैट्स है, मीन मीडियन मोड आता है, बट इफ यू आर एबल टू एनालाइज दैट डेटा, हाउ मेनी पीपल आर विजिटिंग माय प्रोफाइल, what is the characteristic of those people, what is the age group of those people, how much time they are spending on my particular page, or you can say a YouTube channel, or seeing my videos, or on LinkedIn, you will get the entire set of data. If you are able to analyze the data through doing a data analytics course, if you are able to use AI applications on that, AI कैसे use करेंगे? AI से text to video, audio से video,
सिर्फ एक लाइन लिख के भी आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, 10 आवर्स की भी जनरेट कर सकते हैं, 1 मिनट की वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं. So what are we doing? We are having more efficiency in our way of working. And then with these two talents clubbed up marketing, तो और कोई कंपनी को क्या चाहिए? They need revenue. If you are there, you know all these three things together, then you are the person who is going to get a fresher can get even a 30 lakh package if you have the skill, the talent. Yes. Exactly. So if you are able to demonstrate those skill, the talent, and some prior work, कॉलेज के साथ साथ कर लो यार, इसमें कोई अलग से जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज के साथ साथ भी आप कर सकते हो जॉब, ये सब ऑनलाइन वाली है. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि वर्ल्ड इज फेसिंग अ रीस्किलिंग इमरजेंसी. ठीक है. मोर देन 1 बिलियन जॉब्स, एक जो कि 1/3 ऑफ ऑल द जॉब्स वर्ल्ड वाइड, वो टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर होने वाली है इसी डेकेड में, इसी 10 महीने में, 10 साल में, मतलब 2030 तक 1 बिलियन जॉब्स विल बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट. तो इतना तो जॉब चाहिए, 1000 मिलियन पीपल, 1 बिलियन प्रोफेशनल चाहिए. तो और डिमांड बहुत है, बट स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं है, क्योंकि अभी कॉलेज ने करा है, कैचअप करा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, नए नए कोर्स थोड़ा चल रहा है सिस्टम. तो हाई इन डिमांड, हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी अवेट कर रही है आप सबके लिए, अगर आपका सही स्किल सेट है इंडस्ट्रियल 4.0 टेक्नोलॉजीज के लिए, यानी जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था, ये सब टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. तो यही, दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्ट. इससे कोई बढ़िया टाइम नहीं हो सकता फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक यू इन ऑल द स्ट्रीम टू गेट ट्रेन्ड इन स्किल एआई एंड डेटा एनालिटिक्स. Shivani, you take forward. Okay, so here it is not only specific to one particular stream. A student from BSc, a student from arts background, a student from commerce background, a student from BBA or BBOC background. Everybody, absolutely everybody who knows English can be a part of this AI revolution. They can understand the data, they can interpret the data, they can train large language models like now Apurva said. So what are we doing here? We are trying to add more value to our particular CV. Everybody, right now, everybody can become an engineer. Everybody can become a commerce graduate. But what that extra edge you have in your CV, that is the game changer. That is the place where the recruiter will select you and reject the other person who does not have those skills. Because in the end, what matters is the skill and not the degree. But definitely, degree has to be taken. Otherwise, you will not be treated as a person who is well knowledgeable. So, along with the degree, you have to have certain short-term courses here and there in order to prove your worth. Like you are different from all the other people who are entering that field or wanting to enter that particular MNC. Exactly. So, what will this do? This will increase your employability. Yes. Exactly. और जो ये employability increase करने वाला है, इसके लिए Microsoft के से स्लाइड लिया ये मैंने Microsoft के से कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एआई ड्रिवन नो कोड लो कोड एप्स है. वो बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले कि लेस देन 25% कोडिंग नो कोड लो कोड एप्लीकेशन से होती थी. अभी 2026 तक 3 साल फ्रॉम हियर, और इवन 2 साल रह गए, अभी 2023 तो खत्म होने वाला है, 75% ऑफ द कोडिंग विल बी यूजिंग द नो कोड ऐप. तो आपको कोडिंग आनी नहीं है, आपको बताना है भैया ड्रैग एंड ड्रॉप, पावर बीआई, पावर पेजेस, ये कैसे यूज करना है, ये सिखाएंगे कोर्सेस. अब आपको पता है कि चैट जीपीटी एक पता है, मिड जर्नी पता है, बट ऐसे 120+ एप्लीकेशन है जो कि हमको यूज करने आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं. 10 घंटे का काम 10 मिनट में, या 4 घंटे का 4 मिनट में, ये लोग कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनको ट्रेन कर दिया गया है. इतना डेटा हम ही लोगों ने दिया है एवरी डे. जो 2005 से 20, 22, 23 तक हम लोग डेटा देते आ रहे हैं, उन लोगों ने सारा डेटा लेके इनको ट्रेन कर. यस शिवानी. So here on screen, you can see that AI has replaced 4,000 workers in May. Now, this is a report that is given by a newspaper. Then a CEO has been slammed for replacing 90% of the company's support staff with AI chatbot. तो जो काम आप और हम कर रहे थे, वो chatbot कर लेगा. जो चीज आपको लिखनी है और मेरे को लिखनी है, वो AI कर देगा. So why to spend more money on people rather than adopt that technology and use it? तो क्या हो रहा है? 48% companies have replaced workers with chat GPT.
जिनका ना काम था कंटेंट राइटिंग का, ब्लॉग पोस्टिंग का, मीडियम पे आर्टिकल लिखने का, वो सब आराम से एआई कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट्स भी एआई बना रहा है। उस बच्चे को है क्लास में, आई नो they might be using chat gpt to make their answers more you can say inverted commas में more marks gathering. Then as per India Today report, AI will replace millions of human jobs by 2030. अब यहाँ पे डर गए, घबरा गए, AI ये कर देगा, AI वो कर देगा, हमारी जॉब चली गई। जॉब चली नहीं गई, जॉब लगेगी नहीं, ये सब नहीं सोचना है। We have to keep a pace with the others. We have to keep pace with the growing demand in the market. क्या चीजें हैं जिनकी डिमांड ग्रो हो रही है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। क्या चीजें हैं जिनकी स्किल्स लेकर बाकी सब लोगों को पिछाड़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, and we will get a premium salary price. Apurva, just change the slide. So here, as you can see with the graph has towards a rising trend. ये 2016 का graph है wherein AI was being adopted. तब starting था AI adoption का. And आज की डेट में आप देखिए हर इंसान को AI पता है. Everybody knows what ChatGPT is doing. Although they might not be knowing of using the ChatGPT or how efficiently can use it, but still many people are aware that okay, this is the innovative revolution that is being in the entire economy, not only specific to India. Other than that, we can see the starting package of a person who has been trained in AI was 5.3 lakhs per annum, 0 to 3 years experience, which has risen डेटा में भी AI में दोनों में डेटा और AI दोनों में डेटा एंड AI का कॉम्बिनेशन में अराउंड 7.4 लाख का स्टार्टिंग पैकेज लग रहा है, जिनका फ्रेशर्स हैं, those who have 0 to 3 years of experience. Now 0 to 3 आप इसको भी कॉम्बैक्ट कर सकते हो by doing small projects, by taking more of skilling courses like AI में कोर्स ले लिया, data analytics में कोर्स ले लिया. We are also helping you to excel in these courses. We do have all these courses together. उन्हीं कोर्स में सिर्फ कोर्स लेना समझना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट करते हो ना सबमिशन, वैसे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको हैंड्स ऑन समझ भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपका जो है एम्प्लॉयर भी खुश हो जाएगा और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप यही कोर्स से देखें, हाँ सॉरी, यही कोर्स जो आप प्रोजेक्ट करोगे, यही प्रोजेक्ट आपके सीवी में टॉकिंग पॉइंट्स बनेंगे आपके इंटरव्यू में। अच्छा भाई तुमने ये प्रोजेक्ट किया था, ये प्रोजेक्ट में क्या किया बताओ हमको, तो आप बता पाओगे। अगर आपने अच्छे से बता दिया क्योंकि आपने करा होगा सही से, तो वो इंप्रेस हो जाएगा, आपके जॉब लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे वर्सेस दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट जिसने नहीं किया होगा। सॉरी शिवानी, आई कट यू, सॉरी। No, it's okay. So right now, as you can see the salary structure in Bangalore city, if you are there as a fresher, starting salary is over 9 lakh 90,000 per annum. In Hyderabad, it is over 10 lakh. In Mumbai, it is somewhere around 66 to 20 lakh, because according to the area where you are getting that job. In Delhi, it is 5 to 18 lakhs. In Chennai, it is 6 to 16 lakhs. जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, जितने अच्छे आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे, जितना profitable and revenue आप कंपनी के लिए जनरेट कर पाएंगे, so there is no bounds, and I'm sure these salaries are going to increase in the near 2 to 3 months. So 20, 25, 30 L तो ऐसे ही हो जाता है. Then moving on to the average salary data, जो नीचे आप ग्राफ देख रहे हैं, that is towards the rising trend. Why towards rising trend? Every company, be it small or be it a bigger company or an MNC, they're trying to adopt all these emerging technologies in one go because they want to have more profitability for their business. तो जब कोई काम, वही काम आधे मिनट में हो सकता है, तो उस काम के लिए 3 घंटा या 4 दिन क्यों रुके? वही वाली बात होती है। Sure. So here we have the awards that are won by our company EduBook, which relates to MIT University, from Harvard University, AWS EdStart, Times Next, Startup India, NASSCOM, The Hindu, even from TAIM, that is Telangana AI Mission, IIT Kharagpur, IIM Bombay, sorry, IIM Calcutta. Then Microsoft has also awarded us as Microsoft for Startups. Then TiE Mumbai. Then we were the proud winners in the G20 DIN conference in Bali in Indonesia, where we were the only 5 startups who were selected by Indian government to showcase and demo our platform, the skilling platform that we have in the international market. So 20 nations were present there. Startups from all the countries were there, and we won the Jury's Choice Award in the first category. In the first, we stood in the first position there. We have been also given proper recognition by CNBC TV 18, Inc. 42, and also by CNN Indonesia.
as the G20 winners. Other than that, we were also there in the World Economic Forum representing our company. We got grants from Polygon, from Cardano, from Concordium and Seedstars. And also we were invited by the government of India to showcase and demo the entire platform that we have in Dubai Expo 2020. So, and again, EduBook is globally award-winning company which is teaching AI and data analytics at a price which is less than a pizza party. And we all know pizza party 1,000 रुपए में 5,000 रुपए में हो जाती है. So why not pick up your meaning pens and get on doing and do the stuff which is actually needed to get you the right placement opportunity. क्योंकि right बहुत जरूरी है. कहीं पे भी गलत कर लिया तो then the entire career suffers. So the time to act. Yeah, exactly. Yes, of course. So, as Shivani is mentioning, so time to act for all of you now, because you are entering into the placement season. This is the correct time for you to understand the shift that we have just spoken about towards careers in emerging technologies, towards these AI and data analytics. More so, within emerging technology, बहुत कुछ है, friends. Blockchain है, Internet of Things है, robotic drone है, सब में उतनी jobs नहीं है. ठीक है, जितनी मैंने हाई डिमांड दोनों बताया ना, तो दोनों का कंजम्पशन कौन है? एआई का जॉब, डेटा एनालिस्ट का जॉब और डिजिटल मार्केटिंग के जॉब, राइट? सो प्लेसमेंट सीजन से पहले, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले यही टाइम है आपको एक्ट करने का. तो क्या करना है आप लोगों को, अगर आप चाहें, अगर आप समझ रहे हैं हमारी बात, तो हमने एक डुअल कोर्स लेके आए मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का, जो कि हम लोग लाइव पढ़ाएंगे. आपके क्वेश्चंस मिलेंगे एकदम लाइव बाय मी, शिवानी. हम लोग पढ़ाते हैं इसको कोर्स को, और हम लोग ट्रेंड हैं माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, आईबीएम से, आईएसबी हैदराबाद से, और शिवानी यूजीसी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर रही हैं, आपके कॉलेज में भी रही हैं प्रोफेसर, तो और माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर भी हैं. तो जो ऑल द स्टूडेंट्स दैट हैव कम टुडे इन दिस सेशन, जो यहाँ पे भी हैं और जो थोड़े बहुत यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे आई कैन सी मोर देन 400 स्टूडेंट्स, और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उनके लिए लिमिटेड टाइम का ऑफर लेके आए हैं. जो अभी का सेशन देख रहे हैं, सिर्फ उनके लिए 90% प्लस डिस्काउंट. तो अभी हम इंडिया में पहली बार आपके कॉलेज में ऑफर करें. इससे पहले हमने दुबई में, मस्कट में, मीना में 10 टाइम्स प्राइस पे ऑफर किया. बहुत अच्छा गया, फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया हमारे कोर्सेज का, हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज का, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, बिकॉज हम लोग ग्लोबली अवार्ड विनिंग है, जो भी दिखाया था हमने. तो 90% डिस्काउंट, लेस देन पिज्जा पार्टी का कॉस्ट आपका पे हम शेयर कर रहे हैं. जो कि आप अपना इंडिकेशन बताइए कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे. उसके लिए गूगल फॉर्म हम अभी फ्लोट करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं. अब इसके साथ 2 बोनसेस और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाहेंगे हम, जो आप स्टूडेंट्स हैं, जो ये कोर्स लेगा हमारे. एक बोनस है हाउ टू मेक एन इंप्रेसिव रिज्यूमे. मेरे से सीखेंगे. मैंने आईआईटी और आईएम दोनों में क्रैक किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, और दोनों में रिज्यूमे से मैंने गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डीशो, ग्लोबल डेटा जैसे अच्छे पैकेज के कोर्सेज, जॉब्स करी है. उन्हीं रिज्यूमे से वही मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, और क्या रिक्रूटर देखता है. हर रिक्रूटर के पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं. 5 सेकंड में आपकी सीवी देखनी है. नहीं समझ आई, आउट. अगला. नहीं समझ आई, आउट. क्योंकि 10,000 सीवी आती है एक जॉब के लिए. 5 सेकंड भी देखेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको. तो कैसे रेलेवेंट लगना है, कैसे कीवर्ड ऊपर ही लिख देने हैं कि नीचे देखने की जरूरत नहीं. हाँ भैया शॉर्टलिस्ट, चलो इंटरव्यू के लिए बुलाओ, नेक्स्ट स्टेप. फिर आप इंटरव्यू दोगे, फिर आप ये जॉब्स की बात करोगे जो अपने प्रोजेक्ट्स की है ना. तो हाउ टू मेक ए इंप्रेसिव रिज्यूमे, बोनस फ्री लाइव सेशन इसका भी होगा जो एक कोर्स लेगा. और एक और, खाली इंडिया मत देखो फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, इनकी जॉब्स भी ग्लोबल है. अमेरिका की जॉब चाहिए इंडिया बैठे हुए यूएस डॉलर में. हाउ टू गेट इंटरनेशनल रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी सिटिंग इन इंडिया इन योर ऑफिस, सॉरी इन योर होम. घर से लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, बस. बाकी तीसरी चीज नहीं चाहिए. इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, और बाकी हम बताएंगे कैसे मिलेंगी ये रिमोट इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रेशर के लिए. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर को कैसे सिखाओगे, तुम सिखाओगे, हम बताएंगे कैसे सिखाना है. हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी है, वो कंपनीज भी है, ठीक है, जो हार्वर्ड और आईआईटी और आईएम. आप एक प्रोजेक्ट करेंगे और उस एक प्रोजेक्ट के लिए यू विल बी पेड $1,000. $1,000 $1 is 80 rupees in India. तो कितना हो गया, यू कैन कैलकुलेट एंड सी फॉर योरसेल्फ.
So you are spending just 3 hours of your time. You have that is being taught. में या एक दिन आप $1000 कमा सकते हैं. तो ये भी that is a good thing because you will be able to show that in your CV कि मैंने ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करा है. तो ऑब्वियसली जब आपकी स्टार्टिंग जॉब लगेगी तो कहीं पे 4 और 5 लाख का पैकेज नहीं होगा, वो हमेशा 10 प्लस ही जाएगा. इफ यू आर स्टेइंग इन लखनऊ तो भी, इफ यू आर स्टेइंग आउट ऑफ लखनऊ तो भी, दोनों ही केस में, बिकॉज यू हैव दैट स्किल. तो रिमोट वर्क भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है. हाँ, तो मैंने लिंक डालना स्टार्ट करा है. हाँ, ओके, श्योर श्योर मैम. तो मैंने व्हाट्सएप लिंक पेस्ट द लिंक हियर of the group and also of the form. Yeah. So whoever is Shrey, I think Shrey or Shaheen, whoever is coordinating on YouTube, can you please post there as well in the chat? One is Google form to be floated, that the certificate will come. Basically 2-3 things, students, and then I think ma'am want to speak. So the student. Two links. There is one chat link. 1 second, and there is one Google form. So yes, I will share now. So one more thing, all those who are filling this form right now, they were a part of this session either on YouTube or here live on Zoom, or will be getting a certificate of attending this particular webinar. So that is a good thing for you to showcase. Yes, I am posting on WhatsApp group for Shrey and all. Yeah, can you 1 second? Shrey, just post it in YouTube also. Yeah, 1 second. Let me post it there. तो अभी लेट्स डिस्कस कि हम लोग क्या क्या कवर करते हैं कोर्सेज में अपने लाइव प्रोजेक्ट से लेके ठीक है. गूगल फॉर्म भरना कंपलसरी है टू गेट योर अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ नेशनल पीजी कॉलेज और हमारा एडुबुक की तरफ से भी. ठीक है, तो वो फॉर्म भी प्लीज फिल इट, एंड उसमें फीडबैक वगैरह भी है. जो आप नाम चाहते हैं सर्टिफिकेट पे एग्जैक्टली वही नेम और ईमेल आईडी दीजिएगा उसको. नाउ व्हाट ऑल वी कवर इन एआई एंड एमएल कोर्स. इंट्रोडक्शन टू एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है अक्रॉस सेक्टर्स, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, व्हाट इज कंप्यूटर विजन वगैरह वगैरह. हम कवर करते हैं जनरेटिव एआई एप्लीकेशन लाइक चैट जीपीटी वगैरह. Please paste the Google link in the panelist section. Okay. Google form link in the panelist section. Yeah, this is Google form. Is it okay, Shivani, now? So हम इंटरमीडिएट नॉलेज में क्या लेंगे, सेकंड स्टेप में सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, रिग्रेशन क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एसोसिएशन एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. बहुत सिंपल स्टेप्स में, छोटे छोटे स्निपेट्स में हम लोग ये समझेंगे और यूज करेंगे इसको. रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लो कोड नो कोड एप्लीकेशन जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई, जैसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट चैट जीपीटी से कैसे बात करना है, टेक्स्ट से वीडियो कैसे बनानी है, टेक्स्ट से इमेज कैसे बनानी है, मिड जर्नी वगैरह. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स देंगे, हैंड्स ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, सेल्स प्रेडिक्टर मॉडल, योर ओन वेबसाइट यू कैन मेक यूजिंग एआई ड्रिवन ऐप, नो कोड रिक्वायर्ड. You can use your develop your own YouTube channel. उसमें क्या टॉपिक होगा चैनल का, क्या टॉपिक का वीडियो डालोगे, वीडियो की स्क्रिप्ट क्या होगी, वीडियो का टाइटल क्या होगा, सब कुछ एआई बनाएगा एंड टू एंड. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉम्प्ट देने, वो हम सिखाएंगे. अपनी वेबसाइट बनानी है एआई ड्रिवन ऐप से, कुछ भी आप लाइव वेबसाइट बनाएंगे क्लास में ही, और एक प्रेडिक्टर मॉडल बनाएंगे कि सेल्स को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, और क्रिएशन. फिर आप इन प्रोजेक्ट को बना के रिपोर्ट बनाएंगे छोटी सी, और फिर हमको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और छोटा सा एग्जाम होगा 90 मिनट का, बहुत आसान 90 क्वेश्चन का, वो क्लियर करके फिर हमको सर्टिफिकेट मिलेगा. राइट, सर्टिफिकेट ये मिलता है, सर्टिफाइड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एनालिस्ट सीटा मॉड्यूल, ये एडुबुक कॉन्फर करेगा. वी आर अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी एंड अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड विनिंग स्टार्टअप, जो आपने देखा ही. आपकी एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी,
ये सर्टिफिकेट को हम लोग ब्लॉकचेन पे भी स्टोर करेंगे और हमारे साइट आएंगे कि आपने कोर्स किया है। ऐसे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में क्या क्या कवर होगा? डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रिपेयर और क्लीन डेटा, चार्ट, डोनट चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे जिसमें जॉब सबसे ज्यादा लग रही है मार्केट में स्किल के हिसाब से, पावर बीआई। सो पावर बीआई बाय माइक्रोसॉफ्ट, स्ट्रक्चर योर डेटा, वो पूरा डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे आपको, हाउ टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। मैं देखता हूँ खुलता है मेरे को तो आपको दिखाता हूँ। Please note here that all these courses that are being offered by EduBook are completely online. You are getting a combo offer for today only. When you're filling the form, you can set your preferences there. Like it is only for the students of National PG College, where you are getting 90% discount on the base price. Also, you are getting 2 additional things. Like firstly, the Power Pack resume, how you have to prepare your resume to get a good high paying job. And the second one, what are those job opportunities that you can get sitting at home, working for just 2 to 3 hours per day and earning a lot more. Okay, Ronak was asking, so I have just answered it. So 4 things you will get: AI ka course, data analytics ka course, AI ka projects, data analytics के projects, resume making का live session, और मेरा टेम्पलेट, मेरा खुद का रिज्यूमे का टेम्पलेट मैं आप सबको दूंगा, जो आप जस्ट एडिट करके उसको यूज कर सकते हो, जो जनरली एचआर वगैरह यूज करते ही हैं, आईआईटी आईएम्स वालों को लेने के लिए भी। और एक मैं आपको कोर्स में इंटरनेशनल जॉब्स कैसे पाना है रिमोट घर से करता हुआ, वो वाला भी आई विल गिव यू। तो इसमें क्या होगा? क्रिएट अ स्कोर कार्ड टू रैंक कंपनीज ऑन वेरियस केपीआई, हाउ टू स्टार्टअप्स को कैसे रैंक करना है वैसा। फिर क्रिएट योर ओन पावर बीआई डैशबोर्ड, क्रिएट ये देखो, ये पावर बीआई का डैशबोर्ड अभी खुल रहा है मेरा, मैं खुलेगा तो दिखाऊंगा आपको। क्रिएशन ऑफ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये पूरा होगा, और उसका लाइव प्रेजेंटेशन और छोटा सा जो आपने बनाया होगा, और इससे पूरा हैंड होल्डिंग वगैरह हम करेंगे, पूरा डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप सब समझाएंगे आपको। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एआई और एमएल का, और डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन का, 2 अलग अलग, और ये हमारे बारे में है। और गूगल फॉर्म में जो लिंक है उसमें आप अपना बता दीजिए कि कौन कौन सा आपको लेना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या दोनों मिला के, along with bonuses. So I am from IIT Dhanbad. I am gold medalist, CFA charter holder. Work with Goldman, Dish or JP Morgan, skilled in AI, data analytics, Excel, blockchain, Power BI, ChatGPT, cyber security. I'm also international consultant in ESG, financial markets, emerging technologies, trained by Microsoft, Google, IBM, ISB Hyderabad on these emerging technologies, and multiple award winner for various products that I've created, including using certificate on the blockchain. Shivani, you would like to introduce, just cover yourself as a trainer? Yes. So my name is Shivani Mehrotra, and I'm a university topper in Masters of Business Economics course from Lucknow University. I'm also UGC NET qualified in Economics and Management, both the subjects, teaching at National PG also, and St. Joseph College of Commerce in Bangalore and St. Mary's in Hyderabad. I was awarded as top 30 young Indian for my contribution to the training and education field. I have over 10 years of experience in teaching around 25,000 plus colleges, all NAC grade A colleges, 25,000 students in all of these colleges. I also hold the position of National Vice President at WICCI, which is Women's Indian Chamber of Commerce and Industry. I am also a Microsoft Certified Innovative Educator and trained in Power BI, ChatGPT, and PPT. I think I just got a notification that it's almost the end of the session. If you have queries, you can stay. Yeah. If any of you have any query, please stay back. But officially, let's close the session for the teachers and all. For example, I'm just quickly covering that our courses are getting very good feedback, 4 to 5, regarding how we are teaching, and everything is good. In fact, people are posting about us online that they highly recommend and
we did a good job, skill professional. And these are people international. UAE, Muscat, Oman, जहाँ भी हमने online किया था, वो उनको भी बहुत पसंद आया हमारा sessions. And then this is where we got the award. Last year in Indonesia, Bali is the best edtech startup offering these courses, and these are the few media mentions that we have. So whosoever is here, please try and do not forget to fill the form in order to get the certificate. Please mention the correct spelling of your name so that everything is fine in the certificate. So now the session is officially over. Over to Shaheen. Thank you, Apurva Bajaj and Shivani Mehrotra for being the part of pre-placement week. Now I would like to call all the students to post their queries in chat box, and those who are on the live stream, put your queries on YouTube chat box. Okay. As we draw the incredible motivational event to close, I want to express my deepest gratitude to each and every one of you being the part of this remarkable journey over the past few hours. We have been reminded that success is not defined by the absence of challenge, but by ability to rise above them. Let us leave this event with our heart filled with inspiration and our mind brimming with a newfound wisdom. Before we conclude, please take a moment to mark your presence in the online form provided to you in the chat box. It will be valid only for 30 minutes. I repeat it again, it will be valid only for 30 minutes, so you might want to hurry up. Your feedback will be your attendance, and it will help us to improve your future. That is, that your feedback will be your attendance, and it will help us to improve future events. In your WhatsApp group, a link directing to the placement form is also being shared. Please note that the filling of placement form is mandatory for final year student wanting to participate in college placement and internship program 2023 and 24. Two links directing to 2 Telegram groups will also be shared, one for the final year and one for first and second year student. Students are required to Telegram group against their respective classes. Now I would like to call our event coordinator, Dr. Diksha ma'am, to say a few words. Thank you, Ayushi, Shaheen, and Shrey, and the entire NPGC placement team. And in fact, it's gratitude for Apurva ji and Shivani ji for today's session, because all these accolades that you were showing online, I think they are rightly placed because both of you are working really hard and it actually shows. And I saw that, even when the session was going on, you were constantly answering queries. There were almost 27 questions which are already answered, several before the session. And I'm sure... oh my God, you saw all of that? Yes, and students are, I think they're going to post more questions now. And the session will, I think, run for another 40 minutes, if I'm not wrong. Yep. In fact, the placement team of National PG College, Shalini ma'am and team, they make it an effort and they make it a special point to organize such sessions, which are, proving beneficial so that students understand as to what is the need. Only skilling is not the need of today. You need to skill, then you need to upskill yourself. And in case to be industry relevant, you have to reskill also. Very true. So thank you so much to both our panelists today. And thank you to the placement team and my dear students for joining today. So now let's open the session for Q&A. And I request the teachers now so that you can exit and students can continue with their Q&A. Thank you so much. Yes. And students who all have interest in joining, please mark it, and accordingly you can connect with Diksha ma'am, or we will also post details on the WhatsApp group. Most of you have joined there. All of you can join. And yes, rightly so, Diksha ma'am, one small thing I just want to cover. When we started, I started with finance, like as an engineer first, IT, then go to finance. Today I'm in technology. Why? Because things have changed. My finance job is not a finance job now. It's a fintech job. True that. My education is now EdTech, right? EdTech. So healthcare is now health tech. Health tech. So tech is very important across sectors. So thank you so much, ma'am, for having us. And yes, now we'll answer all of your questions. Okay. So first question I'm getting from Anshika Guleria. Okay. So the topic is demand-paying jobs, mostly AI jobs that these days. Right now, a question that I can see is what is digital footprint and how can we
help to ensure that our digital footprint is good. So firstly, when you apply for any job, they are generally you send your resume, you send your WhatsApp number, you send your LinkedIn profile mostly in order to make the other person aware, like, okay, this is the job that I'm applying for, and this is me, this is my personality. So make sure whatever content you're posting in any of the social media platforms, be it Facebook, not only LinkedIn, be it Snapchat or whatever platform that you're using, Twitter even, you should be writing something good. Meaning, something good is like if you are not fond of something, you can obviously write that I don't like mangoes or something like that. But it is not necessary to always try to have negative comments. Make sure that whatever you're trying to portray, if there is certain things that are wrong here and there, or if there are certain points that you want to bring to the other person's notice on any of the social media platforms, make sure you have a professional style of writing. So that is the major thing what we will be discussing in the bonus session also. What are things you have to mention in the resume? What all things should be there in order to make your digital footprint a positive one and not a negative one? So this entire question answer cannot be summed up in just one particular sentence. Try to make yourself more enthusiastic and more energetic in the sense of explaining about your personality. That is the main thing. Yeah, so this is a Power BI dashboard which we created in 10 minutes. 10 minutes from the Excel data. We have all this huge data set, like who bought what product from which store, from North Zone, Central Zone, South Zone, and the product is shipped via which zone, economy zone, economy plus, or immediate or priority. And accordingly, which countries or which customers are from which countries, right? I can do all of this. And then from which day to which date, what's my total sale, what's my sum of cost, what's my profit. So ऐसा data अगर आप बनाएंगे इंटरेक्टिव तो सबको अच्छा लगेगा आपके ऑफिस में. और this is what we learned in data analytics का Power BI वाला कोर्स, तो सेकंड कोर्स है. Shivani, take the next question, please. Yes, sure. Are you able to see question and answer tab? Yes, I am able to see this. So can we do data analytics course without coding skills? So yes. Perfect question, and I have a perfect answer for this. Definitely you can. There is no coding required. Even Microsoft, Google, all of these big coding companies say so. You need not require any. अगर सब लोग coding करेंगे, मेरे को आप ये बताओ, सब coding करेंगे तो coding use कौन करेगा? Exactly. Product use कौन करेगा? तो ये AI है, ChatGPT है, 200 other tools भी हैं. क्या करते हैं? We are not coding. We are not writing a single line of code. हाँ बेटा. So all of this is without coding. हाँ, Shivani. Next one is. So that means there is no coding required. It is for all stream students. There is no Python, no C++, no JavaScript. ऐसा कुछ भी नहीं है. Even with you have to know English. That is it. आपको question पूछना आना चाहिए. आपको interpret करना आना चाहिए. Results देखने आने चाहिए. There is no need of any coding in 3 courses जो मैं बता सकती हूँ. Digital marketing, AI, that is artificial intelligence, and data analytics. 0 code module. 0 code. That is what we are teaching at EduBook. Yes. हमारी वेबसाइट पे देखोगे आप edubook.io. वहाँ पे we have mentioned it clearly that it's a no code, low code platform that we use. The website is coming up. So basically, one of the key highlights is accessibility to learners from all academic background. You don't need any prior coding or computer science experience. And ये जो students आए थे जिन्होंने हमारे को ये feedback भी दिया है ना, किसी को भी coding का इसमें experience नहीं है. ये जो हमारे पास 3000 प्लस स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फीडबैक इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक दिए, किसी को कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं. अभी हम इंडिया में एंटर किए हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है लोगों को रियलाइज होना कि और अदर स्ट्रीम्स, इनफैक्ट हमारा नॉन इंजीनियरिंग पे ही फोकस है. बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इन ब्रांच स्ट्रीम्स को भी कैसे हम लोग आगे लेके जाएं. किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल टू एंटर द म्यूजिक टेक इंडस्ट्री आफ्टर डूइंग माय ग्रेड इन बीसीए? बिल्कुल यस. बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एनालिटिक्स है. म्यूजिक में अगर आपको ट्यून्स आती है, धुन आती है, वो सब आता है, उसको क्या आप एआई से, चैटजीपीटी से कनेक्ट कर सकते हैं. मीनिंग कैन यू क्रिएट न्यू म्यूजिक, you know, using these create music using AI. See, I will show you live demo. Okay, so so I just wrote create music using AI. So 9 best AI generating app, right? So you just have to write
make a soothing music, make a this music, that music, whatever, and accordingly it will make a new music line for you and all. Right? You got to select the genre, like hip hop genre or Latin or whatever, of beats and all, and then you type certain prompt. It will create music for you. Can you train these data sets? The company who is creating this sound drop, they will need people like you. You know music, you know AI. Can you train this? Right? So this is all new. अभी बन क्या है सामने, ठीक है? तो ये सब है मार्केट में अवेलेबल. कोई कोडिंग कुछ चीज की जरूरत नहीं है इसमें. अच्छा, while preparing for government exam, should a student be really serious about the graduation? देखो, government exam is good, but government exam का issue पता है आपको? एक जॉब के लिए, चाहे वो रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो, 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट है, 1 लाख से ऊपर एक जॉब के लिए. उनमें से 10,000 ने तो आपको बताइए क्या कर रखा है ना, आगे आने के लिए. तो बहुत कंपटीशन है और सबसे बड़ा रुपया चलता है, तो वहां पे सक्सेस के चांस बहुत कम है. तो ऐसी जगह क्यों जाया जाए जहां पे हार तय होने का नजदीक है? नेपाल क्यों खेले भाई? इंडिया से नहीं खेलते, बस वर्ल्ड कप में जबरदस्ती का मैच होता है वो खिलाएंगे, ठीक है ना? नेपाल से बांग्लादेश से excuse me Apurva sir, there are a number of questions where people are asking हमारा AI का कोर्स कितना लंबा है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कितना लंबा है, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन, और कोडिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो थोड़ा सा इसके बारे में, दोनों के बारे में बता दीजिए. हाँ, मैं बता देता हूँ. चलो फिर मैं वापस क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा. सो देखिए, कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, ऐसे रहेगा, जूम पे रहेगा, चैट के साथ एनेबल रहेगा. सेकंड, सिर्फ 1 महीने में दोनों चीज हम कवर कर देंगे 15 घंटे में. 15 घंटे में एआई का वो जो मॉडल मैंने आपको बताए थे वो कवर किए जाएंगे. एआई का ये वाला है ना, 15 घंटे में, इंक्लूडिंग लाइव प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. दिखा रहा हूँ एक सेकंड. सो दिस इज राइट. तो ये होगा एआई में 15 आवर्स में, दूसरा में 15 आवर में होगा. कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15th और 16th अक्टूबर से, आइदर 15th और 16th. तो हम एक फाइनल फॉर्म फ्लोट करेंगे, कौन सा डेट आपको फाइनल करता है. तो 22, 15 और 16 ऑफ नवंबर, दिवाली के खत्म होते ही आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक डेटा एनालिटिक्स वाला और एक ये वाला एआई मशीन लर्निंग वाला, एक डेटा एनालिटिक्स वाला. ये 2 कोर्सेज हैं, ठीक है? अब इन दोनों के लिए करने के लिए आप लोगों को रजिस्टर कैसे करना है, उसके लिए एक सिंपल सा लिंक है, वो मैं आपको भेज देता हूं. इस लिंक पे दोनों कोर्स कॉम्बो अलोंग विद सीवी का सेशन मैं अपना व्हाट्सएप पे, जो लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन किए हैं, मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है. एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं. मैं आपको ऑफिशियली, आप ना व्हाट्सएप पे पढ़ भी सकते हैं जो मैंने लिखा है. हाँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी मैंने लिंक भेजा है. हाँ, और एक चीज, हम लोग लाइव रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे. हमारा सपोर्ट का लिंक है, support@edubook.com. तुम्हारी टीम पूरे 24 आवर के अंदर स्टूडेंट का आंसर करेगी. और हमारा फोन नंबर भी है, शिवानी और मेरा. हम लोग इस ग्रुप में एडमिन है. हम लोग भी आप जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप के अंदर 24 आवर में आपका रिप्लाई करेंगे. 24 आवर सिर्फ बोलने के लिए है. रात की 7-8 घंटे, 6-7 घंटे की नींद को छोड़ के बाकी समय ऑन स्पॉट आंसर्स होंगे हमारी टीम के द्वारा आपके लिए, ठीक है? तो लिंक जो है मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ. 9 स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी चलो शेयर कर देता हूँ. जो लिंक है ये 24 आवर के लिए ऑनलाइन वैलिड है. जिनको डिस्काउंट पे वो कोर्सेज लेने अलॉन्ग विद सीवी का सेशन, और जो मेरा सीवी भी उसमें मैं दूंगा आप लोगों को, और एक लाइव सेशन ऑन हाउ टू फाइंड रिमोट जॉब्स, ये सब मिला के. तो अब हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था. हाँ, तो 15 घंटे में 1 महीने में दोनों कोर्स हो जाएंगे. 1 घंटा आफ्टर स्कूल आवर्स होगा, आफ्टर कॉलेज आवर्स, मीनिंग जैसे 7 PM to 8 PM एवरी डे, वैसा करके हम लोग इसको फिनिश करेंगे. 7 PM to 8 PM, सिर्फ 1 घंटा हर दिन, तो उसमें इट विल बी फिनिश्ड. हाँ, ओके, ठीक है. तो एग्जैक्टली, ठीक है. अब और शिवानी, और क्वेश्चंस कौन से थे? और क्वेश्चंस हैं
बैचलर ऑफ वोकेशन। अच्छा ओके, 1 second, let me make Shivani as panelist. 1 second फ्रेंड्स, मैं आपके सारे आंसर भी कर रहा हूँ। प्रमोट टू पैनलिस्ट, हाँ ठीक है। आपको जो लिंक दिया है वो 24 आवर के लिए वैलिड है, उस पे जाके आप पे कर सकते हैं टू रिजर्व योर सीट। ओके हाँ ये है, मैं फिर दे देता हूँ, कुछ मैं ऐड हुए हैं। हाँ so Shivani you have there, हाँ now can you see questions? I can also cover So can you please share the WhatsApp group link in the panelist chat? Okay, again I will share. Yes, they were asking. Other than that, one more issue is like the people joining from YouTube, they will be logged out of the session, I think, due to some technical reasons. Oh so if yes, they want please to, join. So if they want to join here, they can join. If हाँ यहाँ पे if बहुत you, कैपेसिटी है अभी। and if you think that you no longer need to ask any questions, so you are free to leave the session also. Shaheen and Ayushi are here and they can also leave. If there are no questions to be asked, you can leave. If you have any doubts, any questions, please stay back and you can we can answer. हाँ so अभी किसी ने पूछा बैचलर ऑफ वोकेशनल बैंकिंग सेमेस्टर लर्न में पावर बीआई एसक्यूएल these what like okay हाँ हाँ बिल्कुल सही है। पावर बीआई और एसक्यूएल आपका हर जगह लगेगा, फाइनेंस तो एक ही फील्ड है। हेल्थ ट्रैक जहां पे भी डेटा से आपको इंटरेस्ट दिखाना है ना, और डेटा से ही जगह पे अब आ रहा है, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे एजुकेशन हो, जहां पे भी आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, समझना है और